Welcome to Educare. In this video, we will discuss our topic of control account. This video is specifically prepared for FA1 and FA2 students of ACCA. इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे definition of control account and related information, whether the control account are part of double entry system or not, whether they are said to be personal account or impersonal account. Then types of control account, their formats, posting from books of prime entry, what are individual ledger account and reasons for maintaining individual ledger accounts, and reconciliation of control account with the individual ledger account balance. And last, the types of mistakes and omission which causes differences in the control account balance and the individual ledger account balance. Now the most important thing is the application of knowledge. In solving MCQs, you need to identify what information is given in the question and what is the requirement of question. For this, जो भी क्वेश्चन आपके पास कैप्टन एंड बीपी की किट में गिवन है उन्हें एक सीक्वेंस से अरेंज किया गया है. टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने के बाद उन्हें सॉल्व किया गया है. लाइक फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपके पास इन दो किट्स में गिवन है, इस क्वेश्चन के मुताबिक यू हैव बीन गिवन अ कंट्रोल अकाउंट बैलेंस, receivable ledger balance with also the omissions and mistake and reconcile balances required. अब इस हवाले से जो भी क्वेश्चन आपकी किट में हैं वो सॉल्व किए जाएंगे ताकि आपकी उनके हवाले से प्रैक्टिस बेटर हो जाए, अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए. सेम इसी तरह नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि कंट्रोल अकाउंट बैलेंस इज गिवन एंड द रिक्वायरमेंट इज टू फाइंड करेक्ट बैलेंस. अब जो भी क्वेश्चन आपके पास किट्स में इस रेफरेंस से गिवन है कि जहाँ पे कंट्रोल अकाउंट बैलेंस गिवन है और करेक्ट बैलेंस पूछा गया है, उसके बाद आपके पास ये मेंशन है, ये सॉल्व किए जाएंगे. एंड थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन लेजर बैलेंसेस इज गिवन एंड करेक्टेड रिसीवेबल बैलेंस इज रिक्वायर्ड. सो इस तरह से टाइप ऑफ क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने के बाद उनकी प्रैक्टिस कराई जा रही है इस लेक्चर में ताकि आपके लिए इन्हें अंडरस्टैंड करना और याद रखना आसान हो. सो स्टार्ट करते हैं. कंट्रोल अकाउंट्स आर सेड टू बी टोटल अकाउंट्स दैट रिप्रेजेंट द टोटल ऑफ मैनी इंडिविजुअल मेमोरेंडम अकाउंट. इट्स बैलेंस रिप्रेजेंट एन एसेट और अ लायबिलिटी which is a grand total of many individual assets or liabilities. It is the control account balance which will appear in the final account of the business. So this is most important information. This is the control account balance that will be recorded in the statement of financial position, either as asset or liability. Another way of defining control account is that it is a summary account in the general ledger and it is prepared so a total for receivable and total for payable can be calculated, sometimes referred to as nominal ledger. The accounts are in the general ledger are impersonal accounts. They relate to type of income, expenses, assets, liabilities like rent, rates, sales, receivables, payables, rather than to the person to whom the money is paid or from whom it is received. बजाय इसके कि जिस पर्सन को हम पैसे पे कर रहे हैं उसका नाम रिकॉर्ड करें या जिससे पैसे रिसीव कर रहे हैं उसका नाम रिकॉर्ड करें, हम इम्पर्सनल अकाउंट्स में इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटीज़ के हवाले से रिकॉर्डिंग करते हैं. सो दे आर देयरफॉर कॉल्ड इम्पर्सनल अकाउंट्स. Transactions are posted to accounts in the general ledger from the books of prime entry. What does mean posting? Posting means to enter transaction in ledger account in the general ledger from the books of prime entry. तो posting किसे कहते हैं कि transaction आप ledger account में record कर रहे हैं general ledger में from the books of prime entry. Control accounts are mainly used for receivables and payables. Control accounts are part of double entry system. Day books and cash books are totaled periodically. You can say once a month, and the appropriate totals are posted to the control accounts. Control account act as an internal check. These act as an internal check on the accuracy of accounting records. Control account reconciliation should be carried out at regular interval.
The receivable control account provides a check on the accuracy of posting made to the personal account in the receivable ledger. Same is the case of payable ledger control account. This provides a check on the accuracy of posting made to the personal account in the payable ledger. Receivable control account is an account in which records are kept of transactions involving all receivables in total. कि सारे के सारे रिसीवेबल, सारे के सारे वो कस्टमर जिनसे हमने पैसे रिसीव करने हैं, उन सब के मुतालिक इन टोटल रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट में. So we can say that the balance on the receivable control account at any time will be the total amount due to the business at that time from its customer. तो किसी भी वक्त भी हम बैलेंस जो करते हैं कंट्रोल अकाउंट को, वो कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस हमें ये शो करता है कि तमाम कस्टमर्स ने कितने पैसे अदा करने हैं बिजनेस के. Receivable ledger control account, which is known as total receivable account, is a control account in which records are kept of transaction involving all receivable in total, and it is posted with total from the sale day book and cash book. तो इसमें हम सारी की सारी ट्रांजैक्शन के हवाले से ये रिकॉर्ड करते हैं कि कितने लोगों से इन टोटल हमने पैसे रिसीव करने हैं, और ये टोटल कहाँ से रिकॉर्ड किया जाता है? सेल डे बुक और कैश बुक से. नॉर्मली रिसीवेबल का बैलेंस आपका डेबिट बैलेंस है, एज इट इज़ एन एसेट. सो ओपनिंग बैलेंस आपका रिकॉर्ड किया जाएगा डेबिट साइड पे. देन जितनी भी क्रेडिट सेल आप कर रहे हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्रेडिट सेल आपके पास रिसीवेबल के नाम से एसेट इंक्रीज हो रहा है. सो क्रेडिट सेल वुड बी रिकॉर्डेड एज डेबिट as it causes an increase in the asset named receivable. Then whatever amount you have received from your customer would be recorded on the credit side. Cash received from customers. अगर कोई कस्टमर हमें गुड्स रिटर्न कर देते हैं, तो एज अ रिजल्ट ऑफ सच रिटर्न आपके पास रिसीवेबल के नाम से एसेट डिक्रीज हो जाता है. सो सेल रिटर्न आल्सो कॉजेज अ डिक्रीज इन द रिसीवेबल एसेट. If the customers are unable to pay you, it is said to be bad debt or irrecoverable debt. As a result of recording bad debt, again आपके पास receivable के नाम से asset decrease हो जाएगा. Next is contra. Contra means अगर एक ही कस्टमर से आपने पैसे रिसीव भी करने हैं और पे भी करने हैं, तो इन दैट सिचुएशन हम ना ही कुछ अमाउंट रिसीव करते हैं ना ही पे करते हैं. Like for example, if I have to receive 500 from you and I have to pay 500 to you, 500 रुपये मैंने आपसे रिसीव करने हैं, 500 आपको पे करने हैं. इन दैट केस हम आपस में कोई भी कैश का लेन देन नहीं करेंगे. बट इन बुक्स ऑफ अकाउंट वी हैव टू रिड्यूस आवर पेबल एज वेल एज रिसीवेबल. सो रिसीवेबल यहाँ पे आपके पास डिक्रीज हो जाएंगे. एंट्री इसकी पास की जाती है पेबल टू रिसीवेबल, एंड कॉन्ट्रा के नाम से इसे रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है. देन देयर इज अ सिचुएशन विच इज नेम एज कैश रिफंड. फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपनी गुड्स अपने कस्टमर को क्रेडिट पे सेल की हैं, कस्टमर किसी वजह से वो चीज़ें आपको रिटर्न कर देता है. एट द टाइम जब कस्टमर आपको चीज़ें रिटर्न कर रहा है, मिस्टेकिंगली उसे कैश सेल कंसिडर करते हुए आपने सेल रिटर्न के वक्त कुछ कैश अपने कस्टमर को रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया. आपने गुड्स सेल की थी कस्टमर को क्रेडिट पे, उधार पे, लेकिन अब वो जो गुड्स कस्टमर ने हमें रिटर्न कर दी, आपको रिटर्न कर दी, तो ऐसी सूरत में आपको कैश पे करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि गुड्स कैश पे सेल नहीं की गई थी. बट अगर मिस्टेकिंगली अगर आपने गुड्स के बदले कुछ कैश पेमेंट कर दी है, सो दैट इज़ द अमाउंट यू हैव टू रिसीव फ्रॉम योर कस्टमर एंड दैट इज़ नेम्ड एज कैश रिफंड. एंड देन आ जाता है आपके पास क्लोजिंग बैलेंस कि एट द एंड ऑफ द पीरियड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टोटल रिसीवेबल्स
at the end of that period. Now it is about payable control account. Payable control account is an account in which records are kept of transaction involving all payable in totals, and the balance on this account at any time will be the total amount owed by the business at that time to its supplier. यानी हम टोटल सप्लायर्स के हवाले से जितने भी लोगों से हमने क्रेडिट पे चीज़ें परचेज़ की हैं उन सबको जो अमाउंट पे करनी है वो इन टोटल रिकॉर्ड की जाती है पेबल कंट्रोल अकाउंट में, और किसी वक्त भी इसका बैलेंस हमें ये शो करता है कि दिस इज़ द अमाउंट वी हैव टू पे टू ऑल ऑफ आवर सप्लायर्स. Payable control account are also known as total payable account. It is an account in which records are kept of transaction involving all payables in total, being posted with totals from purchase day book and cash book. इसमें मेनली जो अमाउंट ट्रांसफ़र की जाती है वो है परचेज डे बुक और कैश बुक का टोटल. नाउ अबाउट इट्स फॉर्मेट. पेबल कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस नॉर्मली क्रेडिट है as it is your liability. As a result of further credit purchases, आपके पास ये liability increase हो जाती है, तो टोटल जितने भी कस्टमर सप्लायर से आपने चीज़ें परचेज़ की ऑन क्रेडिट वो यहाँ पे क्रेडिट परचेज के नाम से रिकॉर्ड कर दी जाएंगी. नाउ वट एवर अमाउंट यू हैव पेड टू योर सप्लायर्स is recorded as debit. Cash paid to suppliers. Then if there is any purchase return, it will also be recorded. If the supplier has offer you a discount, settlement discount, and you have availed that facility, in that case discount received would also reduce your liability. Also contra will reduce your liability, and if there is any cash refund by your supplier to you, in that case that cash refund would increase your liability, and the total would be recorded at the end of the period in the name of balance carried down. The double entry is completed by posting the daily total from the day books. आपके पास daily totals from the day books जो है वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं. It could be transferred daily or monthly or quarterly or semi-annually. When sale day book totals are posted, it should be recorded receivable, ledger, control account debit and credit sales. Remember, sale day book is a book in which all credit sales have been recorded. तो अब सेल डे बुक का जो भी टोटल है उसे जब आप पोस्ट करेंगे तो उसकी एंट्री पास की जाएगी, रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और सेल्स को क्रेडिट. इसी तरह सेल रिटर्न डे बुक का टोटल जब पोस्ट किया जाएगा तो उसकी एंट्री पास होगी सेल्स रिटर्न डेबिट and receivable ledger control account would be credited. On receipt of cash from customer, कैश बुक से टोटल ट्रांसफ़र किया जाएगा जिसकी एंट्री पास की जाएगी. कैश और बैंक अकाउंट would be recorded as debit and receivable ledger control account would be recorded as credit. The double entry is completed by using the daily total from the day book in case of purchase ledger control account. परचेज डे बुक के टोटल को रिकॉर्ड करने के हवाले से एंट्री पास की जाएगी. परचेजेस वुड बी रिकॉर्डेड एज डेबिट एंड परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट वुड बी रिकॉर्डेड एज क्रेडिट. फॉर परचेज रिटर्न the entry would be recorded as purchase ledger control account would be recorded as debit and purchase return would be recorded as credit.
The total of discount received column from the cash payment book would be recorded as purchase ledger control account debit and discount received credit, and cash and checks paid to supplier would be recorded as purchase ledger control account debited and cash account credited. Now the MCQ, which of the following is the correct posting from the sale day book to the journal ledger? तो चूंकि बात की जा रही है सेल डे बुक की, तो सेल डे बुक से ट्रांसफ़र करने के हवाले से वी हैव कंसिडर दैट द एंट्री टू रिकॉर्ड दिस इज रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट. सो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पे रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट और सेल्स क्रेडिट दी गई हैं. सो दिस इज हेयर सी ऑप्शन इज अ राइट चॉइस फॉर अस. Another question, you send a check to one of your credit suppliers to pay an amount due. How is this posted to the journal ledger? अगर आप अपने सप्लायर को कैश पे कर रहे हैं, in that case the entry should be recorded as purchase ledger control account debit and cash credit. So this would be again C option for us, where payable ledger control account is recorded as debited, and this would also be said to be payable ledger control account, and cash account as credit. Another question, which of the following is the correct posting from the purchase day book? And from purchase day book, if you are posting entry, it would be recorded as purchase account debit and payable ledger control account credit. So purchase debit and payable ledger control account credit, here this is A option. Now it is about receivable ledger account. बिजनेस में दो पैरेलल अकाउंट्स बनाए जाते हैं. एक तो टोटल रिसीवेबल अकाउंट जो कि कंट्रोल अकाउंट कहलाता है इन द जनरल लेजर, एंड सेकंड इज द मेमोरेंडम रिसीवेबल लेजर, यानी एक इंडिविजुअल रिसीवेबल लेजर के हवाले से अलहदा से अकाउंट बनाया जाता है. Remember that only the total receivable account is actually part of double entry system. कि आपके पास जो कंट्रोल अकाउंट है वही डबल एंट्री सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन फिर भी इंडिविजुअल अकाउंट बनाने की ज़रूरत है. Why so? Because we need to identify कि हर कस्टमर से हमने कितने पैसे रिसीव करने हैं, सो दैट हम डिफरेंट पॉइंट्स को चेक कर सकें. लाइक हम क्रेडिट लिमिट ऑफ दैट कस्टमर चेक कर सकें. लाइक हम ये देख सकें कि when to send reminder for the payment that is receivable from that customer. The entries in the day books are posted to personal account in the receivable ledger. Receivable ledger में भी entries जो है वो day book से ही रिकॉर्ड की जाती हैं, लेकिन every single entry is recorded from the book of prime entry to the personal ledger. Remember कि कंट्रोल अकाउंट में हमेशा सेल डे बुक, परचेज डे बुक के टोटल्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं. अब सेल डे बुक में जो भी आपने सेल्स की हैं एक इंडिविजुअल कस्टमर मिस्टर ए को, वो मिस्टर ए के इंडिविजुअल लेजर अकाउंट में डायरेक्टली फ्रॉम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री रिकॉर्ड की जाएंगी. द रिसीवेबल लेजर कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पर्सनल रिसीवेबल अकाउंट्स. दे आर सेपरेट अकाउंट्स फॉर ईच इंडिविजुअल कस्टमर, and they enable a business to keep a continuous record of how much a customer owe to the business at any time. तो यहाँ पे इंडिविजुअल लेजर अकाउंट हमें सिर्फ एक स्पेसिफिक कस्टमर के हवाले से कि जिसका हम अकाउंट बना रहे हैं, हमें ये बताता है कि इस कस्टमर से हमने कितने पैसे रिसीव करने हैं. अ कस्टमर अकाउंट इन द सेल लेजर विल नॉर्मली शो अ डेबिट बैलेंस. तो नॉर्मली ये डेबिट बैलेंस शो करता है, बट इट कुड बी अ क्रेडिट बैलेंस आल्सो. Receivable ledger accounts are written up as follows. When an individual entry are made in the sales day book, invoice sent out, they are subsequently also made on the debit side of relevant customer account. तो आपके पास जब भी कोई सेल इनवाइस सेंड की जाती है कस्टमर को, तो उस कस्टमर के अकाउंट में भी
डेबिट साइड पे सेल रिकॉर्ड कर ली जाती है। सिमिलरली व्हेन इंडिविजुअल एंट्रीज आर मेड इन द कैश बुक लाइक पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम दैट कस्टमर और इन द सेल रिटर्न डे बुक, they are also made on the credit side of the relevant customer account. Control is kept over receivable ledger by comparing the total of individual account with the balance on the receivable control account. Same is the case of payable ledger account. The personal account showing how much is owed to each supplier are contained in the payable ledger accounts. The entries in the day book are posted to personal account in the payable ledger. In the same way कि जैसे आपके पास सेल डे बुक से एक इंडिविजुअल कस्टमर के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन है वो उस इंडिविजुअल कस्टमर के लेजर अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है, तो पेबल परचेज डे बुक से आपके पास पेबल लेजर अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र की जाएगी एक इंडिविजुअल सप्लायर के हवाले से। एन एज एनालिसिस ऑफ पेबल लिस्ट पेबल बैलेंसेस एनालाइज बिटवीन डिफरेंट एज और डेट, यानी हम ये भी कंसिडर करते हैं इसकी मदद से कि किस सप्लायर को कितना अरसा हो गया है पेमेंट किए हुए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि अगर किसी सप्लायर को बहुत ज़्यादा देर हो गया और हमने पेमेंट नहीं की तो इट माइट बी पॉसिबल कि नेक्स्ट टाइम वो सप्लायर हमें टाइमली गुड्स सप्लाई ना कर सके। द इंडिविजुअल एंट्रीज इन कैश एंड डे बुक विल हैव एंटर्ड वन बाय वन इन द अप्रोप्रिएट पर्सनल अकाउंट्स contained in the sale and purchase ledger. These personal accounts are not part of double entry system. This is the important point. ये personal account आपके पास double entry system का हिस्सा नहीं है. They are only memorandum. But फिर भी इनको maintain किया जाना ज़रूरी है. Reasons for maintaining personal account for each customer. A customer might telephone and ask how much he currently owes. एक कस्टमर आपको फ़ोन करके पूछता है कि उसने आपके कितने पैसे अदा करने हैं, तो अगर हमने उस इंडिविजुअल कस्टमर का अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो हमारे लिए फाइंड आउट करना क्वाइट डिफ़िकल्ट है दैट हाउ मच वी हैव टू रिसीव फ्रॉम दैट कस्टमर। सो स्टाफ मस्ट बी एबल टू टेल द कस्टमर द स्टेट ऑफ हिज अकाउंट, क्योंकि हमने पर्सनल अकाउंट बनाया हुआ है हम उसे बता सकते हैं। सेकेंड, इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस टू सेंड आउट स्टेटमेंट टू क्रेडिट कस्टमर। स्टेटमेंट के जिसमें डिटेल दी जाती है कि इस मंथ के स्टार्ट में आपका कितना बैलेंस था, आपने कितने पैसे हमारे अदा करने थे, ड्यूरिंग दिस मंथ हमने मज़ीद आपको कितनी सेल्स की, कितने पैसे आपसे रिसीव किए और अब आपने कितने पैसे हमारी कंपनी के अदा करने। दिस इज सेड टू बी अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो कॉमन प्रैक्टिस ये है कि स्टेटमेंट क्रेडिट कस्टमर को सेंड की जाती है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, शोइंग हाउ मच दे स्टिल ओ, कितनी अमाउंट उन्होंने हमारी पे करनी। रिमेंबर दैट इट इज़ सेंड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो ये बात भी आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। थर्ड पॉइंट, द मैनेजर ऑफ द बिजनेस विल वांट टू कीप अ चेक ऑन द क्रेडिट पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल कस्टमर। ये देखना चाहता है कि उस इंडिविजुअल कस्टमर की क्रेडिट पोजीशन क्या है, एंड टू इंश्योर दैट नो कस्टमर इज एक्सीडिंग हिज क्रेडिट लिमिट बाय परचेजिंग मोर गुड्स। आपने उस पर्सन की क्रेडिट रेटिंग के मुताबिक उसकी क्रेडिट लिमिट अलाउ कर दी है। अब आप ये चेक करना चाहते हैं कि कहीं उस कस्टमर ने आपसे उस लिमिट से ज़्यादा तो नहीं चीज़ें परचेज़ कर ली। सो इसके लिए भी इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट का होना ज़रूरी है कि जिसकी मदद से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि उसने कितने पैसे आपके अदा करने हैं। इफ़ अ कस्टमर मेक्स अ पेमेंट, द बिजनेस मस्ट बी एबल टू सेट ऑफ द पेमेंट अगेंस्ट द कस्टमर debt and establish how much he still owes on balance and which particular items are left unpaid. तो अगर कस्टमर कोई पेमेंट करता है तो हमने उसकी सेट ऑफ करनी है पेमेंट उसकी डेट के अगेंस्ट, और ये भी कंसिडर करना है कि हाउ मच ही स्टिल ओज, और कितनी अमाउंट उसकी किस रेफरेंस से किस पर्टिकुलर डेट की सेल के हवाले से अनपेड है। Now there are different types of mistakes that can cause a balance on the control account to not agree with the sum of individual receivable or payable balance. तो आपके पास कई ऐसी रीज़न हैं कि जिसकी वजह से कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस रिसीवेबल और पेबल बैलेंस के साथ मैच नहीं करता। These mistakes are known to be costing error in the day book, यानी डे बुक में सेल डे बुक में आपके पास टोटल 2,20,000 था,
अगर बाय मिस्टेक आपने टोटल गलती से 2,22,000 लिख दिया है तो इसका मतलब है कि जो टोटल आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं कंट्रोल अकाउंट में वो भी गलत है। सेकंड, पोस्टिंग एरर। पोस्टिंग करते वक्त आपने किसी कस्टमर की अमाउंट जो है वो गलत रिकॉर्ड कर दी, किसी इंडिविजुअल कस्टमर के अकाउंट में अमाउंट मिस्टेकिंगली गलत रिकॉर्ड कर दी। एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन होगी कि 767 को 776 रिकॉर्ड कर दिया। और वन साइडेड कॉन्ट्रा सिर्फ आपने रिकॉर्ड किया, ईदर यू हैव डिक्रीज द receivable or decrease the payable. An entry that has been made in the individual account but not in the control account. कोई ऐसी एंट्री थी कि जिसे कंट्रोल अकाउंट में पास नहीं किया गया, या वाइस वर्सा एन एंट्री बीइंग ओमिटेड फ्रॉम द कंट्रोल अकाउंट। कोई एंट्री ओमिट हो गई है आपके पास कंट्रोल अकाउंट से। सो फर्स्ट, एन एंट्री इज करेक्टली रिकॉर्डेड इन लेजर बट नॉट इन कंट्रोल अकाउंट। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है, a receivable paid $10 in cash. This has been correctly recorded in the receivable ledger, but no entry have been made in the receivable control account. एक रिसीवेबल ने $10 आपको पेमेंट कर दी, इस बात को करेक्टली रिसीवेबल लेजर में रिकॉर्ड कर लिया गया, बट कोई भी एंट्री रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट में पास नहीं की गई। The entry should be recorded on the credit side ऑफ कंट्रोल अकाउंट, कि जब भी कोई अमाउंट हम रिसीव करते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ सच रिसिप्ट ऑफ अमाउंट, हमारे पास रिसीवेबल के नाम से बैलेंस रिड्यूस हो जाता है। Another mistake, return inwards means sale return of $35 had been recorded in the receivable ledger. ये भी एंट्री आपकी रिसीवेबल लेजर में रिकॉर्ड हो चुकी है, but not in the receivable control account. Return inwards means sale return. Sale return would also be recorded on the credit side of control account. Sales purchase day book or sales purchase return day book has been under cost or over cost. This is a mistake in control account. Again आपके पास क्या इसकी एग्जांपल हो सकती है, वन पेज ऑफ सेल डे बुक हैज़ बिन अंडर कॉस्ट बाय 100। अगर सेल डे बुक आपकी अंडर कॉस्ट हुई है तो इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए आप डेबिट साइड ऑफ कंट्रोल अकाउंट पे ये अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि सेल्स रिकॉर्ड नहीं हुई, कम रिकॉर्ड हुई है, मज़ीद रिकॉर्ड होने से रिसीवेबल का बैलेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। So it would be recorded on the debit side of control account. Remember, अब ये याद रखने वाली बात है कि जब भी कभी अंडर कॉस्ट या ओवर कॉस्ट की मिस्टेक हो रही है, whether it is a mistake in a sale day book or purchase day book or sale return day book or purchase return day book, this is a mistake of control account. So इसे rectify भी control account में ही किया जाएगा। And one page total of sale day book has been over cost. अगर सेल्स ओवर कॉस्ट हो गई है तो इसका मतलब है जितनी सेल्स आपको रिकॉर्ड करनी चाहिए थी आपने उससे ज़्यादा सेल्स रिकॉर्ड कर दी है, आपने अपने रिसीवेबल के नाम से बैलेंस को ओवर कॉस्ट कर दिया। अगर आप 100 रुपीज़ की सेल्स कर रहे हैं, सो यू हैव टू रिसीव 100 रुपीज़ फ्रॉम योर कस्टमर, बट इफ़ यू हैव रिकॉर्डेड इट एज 120, इट मीन्स कि आपने रिसीवेबल को 120 रिकॉर्ड कर दिया। सो 20 से आपको अब रिसीवेबल को रिड्यूस करना है और ये अमाउंट आपके पास क्रेडिट साइड ऑफ कंट्रोल अकाउंट पे रिकॉर्ड करके रेक्टिफाई की जाएगी। The purchase day book has been added incorrectly, overstating the total by 600. तो यहाँ पे भी आपके पास पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट जिसे नॉर्मली क्रेडिट किया जाता है, बट अब आप इसे डेबिट रिकॉर्ड करेंगे और इस मिस्टेक को डेबिट साइड ऑफ पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। This entry would be recorded on the credit side of receivable ledger control account.
Discount receipt of 1340 had been posted to the personal account concerned but not to the control account. As a result of discount received, again आपके पास payable का balance reduce हो जाता है, so it should be recorded on the debit side of payable ledger control account. Sometimes an item of receivable ledger control account is posted in payable ledger control account by mistake. For example, an irrecoverable debt of 980 written off Jim Birch account in the receivable ledger and had been incorrectly posted to the payable control account. To rectify this, we need to reduce payables by 980 by recording it on the debit side of payable ledger control account. Now the MCQ in this regard. Deborah performed a receivable ledger control account reconciliation and found the following error. The first is the sale day book was under cost by 100. If the sale day book was under cost by 100, it means we need to debit the receivable ledger control account. Second is an invoice from the sale day book had been posted to the individual customer account. Deborah performed a receivable ledger control account reconciliation and found the following error. The sale day book was under cost by 100. If the sale day book was under cost by 100, it means we need to record the receivable ledger control account as debit. Because sales under cost हुई है means कम लिखी हुई है, sales को increase करना है. अगर sale day book का total under cost या over cost हो तो it is a mistake in the control account. तो कंट्रोल अकाउंट में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करके इसे रेक्टिफाई किया जाता है. सेकेंड, एन इनवॉइस फ्रॉम द सेल डे बुक हैड बीन पोस्टेड टू द इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट एज 769 इंस्टेड ऑफ फिगर ऑफ 679. कि इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट में हमें 679 से रिसीवेबल की फिगर रिकॉर्ड करनी थी, हमने बाय मिस्टेक 769 से रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लिए, यानी 90 से रिसीवेबल को इंक्रीज़ कर दिया. तो रेक्टिफाई करने के लिए 90 से रिसीवेबल को डिक्रीज़ किया जाएगा. क्वेश्चन यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द नेसेसरी एडजस्टमेंट टू इंश्योर द बैलेंस रिकॉन्साइल एट द करेक्ट अमाउंट. तो इसके लिए रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट और 90 सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कस्टमर बैलेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड रीजन फॉर कीपिंग अ रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट. नंबर 1, टू ऑब्टेन अ फिगर फॉर रिसीवेबल टू बी इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. तो एग्जैक्टली आपके पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमेशा रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट से ही इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है. टू असिस्ट इन लोकेशन ऑफ एरर, सो इट इज ऑल्सो ट्रू. एंड द थर्ड वन इज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एंट्रीज मेड इन द कस्टमर पर्सनल अकाउंट. सो इट इज ऑल्सो ट्रू दैट all three are the valid reasons. So the option, right option would be C. If sales tax is also involved in the receivable entry, so the receivable control account entry with sales tax would be, for example, अगर आप 100 की अमाउंट की गुड सेल कर रहे हैं और 20 आप सेल्स टैक्स भी रिसीव कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, देन इट वुड बी रिकॉर्डेड एज डेबिट रिसीवेबल ledger control account credit sales and credit sales tax. If 100 value of in 100 worth of goods has been sold, sales would be credited by 100. अगर आप उस पर 20 पाउंड्स या $20 की टैक्स आप रिसीव कर रहे हैं तो $20 वुड बी रिकॉर्डेड एज योर लायबिलिटी, बिकॉज दिस इज द अमाउंट यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट, द HMRC, एंड द रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट वुड बी डेबिट बाय 120. तो यहाँ पे MCQ कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है कि
whether sales would be recorded inclusive of sales tax or exclusive of sales tax. Whether sales would be recorded as inclusive of sales tax or exclusive of sales tax. So your answer would be exclusive, क्योंकि सेल्स की अमाउंट में हम सेल्स टैक्स शामिल नहीं करते. The second question that can be asked in MCQs, whether the receivable ledger control account would be recorded as inclusive of sales tax figure or exclusive of sales tax figure. So for receivable ledger control account, the sales tax figure is inclusive. XYZ has the following balances extracted from the written inward day book for a month. Total including sales tax 36,000. सेल्स टैक्स की अमाउंट इसमें 6,000 है और नेट 30,000 की अमाउंट है. रिमेंबर आपके पास 36,000 से रिसीवेबल डेबिट, receivable ledger control account would be debit by 36,000. सेल्स वुड बी रिकॉर्डेड एज क्रेडिट और ये नेट अमाउंट से हमेशा की जाती है 30,000. या तो आप इसे एक्सक्लूसिव कह लें या नेट कह लें, और रिसीवेबल को या ग्रॉस कह लें या इंक्लूसिव कह लें, और सेल्स टैक्स रिकॉर्ड किया जाएगा 6,000 क्रेडिट से. सो आपके पास राइट चॉइस इस सिलसिले में, बट दिस इज रिमेंबर सेल रिटर्न डे बुक. सो इन दैट केस द एंट्री वुड बी receivables would be credit, receivable ledger control account would be credited by 36,000. Sales return would be debit by 30,000 net figure, and sales tax would be debit by 6,000. So this is the right answer in case of sale return day book. So debit sale return, debit sales tax, and credit sale receivable ledger control account. First is our right option. Next question is, Jane has the balance of 1,25,000 on her receivable ledger control account at the end of June. What does this mean? जैन के receivable ledger control account की अमाउंट शो कर रही है बैलेंस 1,25,000 का. इसका मतलब है कि जेन ने अपने कस्टमर से, अपने तमाम कस्टमर से $1,25,000 रिसीव करने हैं. तो ये बात हमें किस ऑप्शन में मेंशन है? फर्स्ट ऑप्शन दे आर सेइंग दैट शी हैज़ बॉट 1,25,000 ऑफ गुड्स एंड पे. नो, अगर आप चीज़ें परचेज करें तो आपके पेबल्स अराइज होते हैं, रिसीवेबल नहीं. सेकेंड, शी इज़ ओड 125,000 बाय हर कस्टमर. दैट इज़ द राइट पॉइंट. इसने अपने कस्टमर से 1,25,000 रिसीव करने हैं. दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Third, Tom started his own business on 1st January. During January, he made a cash sale of 4,900 and issue a credit sale invoices of 12,450, of which 9,500 had been paid by the end of January. What would be the balance of the receivable ledger control account in general ledger? तो simply इसका कोई opening balance नहीं है, इसने business अभी start किया है. Whatever he made a credit sale would be recorded on the debit side, और ये आपके पास सेल आ जाएंगी 12,450. आफ्टर दिस ही हैज़ रिसीव्ड कैश फ्रॉम हिज कस्टमर, और कितना कैश उसने कस्टमर से रिसीव किया है? 9,500. आफ्टर डिडक्टिंग 9,500 फ्रॉम 12,450, द बैलेंस वुड बी 2,950. So A is your right option. The balance on the payable ledger control account should be equal to which other figure in the accounting system? जो बैलेंस आपके पास पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट में है वो सम ऑफ इंडिविजुअल पेबल के इक्वल होना चाहिए. द फर्स्ट इज द टोटल ऑफ द बैलेंस ऑन द इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट. नो, बिकॉज पेबल लेजर विद रेफरेंस टू सप्लायर कंसिडर किया जाता है. सप्लायर को हमने पेमेंट करनी है, कस्टमर को नहीं. द टोटल ऑफ द बैलेंस ऑन द इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट. सो दिस इज द राइट आंसर. Another question, the year-end balance on Mel's receivable control account stands at 6,650.
What does this mean? It means customer has to pay 6,650 to Mel. So first is the right option, customer owe Mel 6,650. Customer ने Mel के 6,650 pay करने. The second, Mel owes 6,650. It means Mel ने pay करने. This is not the right option. Next is the following statement relate to payable ledger control account. Settlement discount will not be recorded in the payable ledger account. Wrong. Settlement discount record किया जाता है payable ledger control account में. The allowance for irrecoverable debt is recorded in the payable ledger control account. Again wrong. आपके पास payable ledger control account में bad debt से related कोई चीज़ record नहीं की जाती. So both are wrong. Settlement discount will not be recorded in the payable ledger account. This is a wrong statement क्योंकि settlement discount record किए जाते हैं. Allowance for receivable bad debt वो भी आपके पास payable ledger control account में record नहीं किए जाते. Both are wrong. So our option is D. Which of the following appears on the credit side of purchase ledger control account? Purchases would be recorded on the credit side of purchase ledger control account. So it is the first option, purchase and other expenses would be recorded on the credit side of purchase ledger control account. Now, which of the following could create a debit balance on the account of payable ledger and underpayment to a supplier, or duplicate payment to supplier of a supplier account, trade discount received and overcharge on a supplier invoice? सप्लायर अकाउंट नॉर्मली आपका क्रेडिट होता है. डेबिट उस सूरत में हो सकता है कि अगर आपने अपने सप्लायर को ज़्यादा पेमेंट कर दी है. लाइक इफ़ यू हैव परचेज गुड्स वर्थ ₹100 एंड यू हैव पेड 200, इट मीन्स दैट आपने उसे ओवर पेमेंट कर दिया है. नाउ यू हैव टू रिसीव दैट अमाउंट और फर्दर गुड्स फ्रॉम हिम. सो दैट इज़ वाई योर बैलेंस इज डेबिट. सो अ डुप्लीकेट पेमेंट ऑफ अ सप्लायर अकाउंट इज़ योर राइट चॉइस. Now, which of the following would be on the debit side of payable ledger control account? Cash paid, right. Purchase return, right. Discount received, right. But not purchases. So it is first option 1, 2, 3. So ये all question आपके पास formats के according पूछे जा रहे हैं. Next, Richard has a balance of 3,50,000 on his payable ledger control account at the end of May. It means कि Richard ने अपने supplier को 3,50,000 पे करने हैं. He is owed 3,50,000 to by his customer. No, customer का concern नहीं है. He owes 3,50,000 to his supplier. उसने 3,50,000 अपने supplier को pay करने हैं. The year-end balance on Fatma's payable control account stands at 3,525. What does this mean? Again, Fatma has to receive $3,525 from her customers. So, suppliers owes Fatma, sorry, it was payable control account. It means Fatma has to pay her supplier 3,525. If it is about suppliers payable, then second would be the right option. Fatma owes 3,525 to suppliers. Next is Rivano has a balance of 3,50,000 on his payable ledger control account at the end of May. It means Rivano has to pay 3,50,000 to his supplier. So it would be it owes 3,50,000 to its supplier. How will be a payable ledger control account appears in the financial statement? As a liability. जो भी आपने अमाउंट अपने सप्लायर को पे करनी है, इट वुड बी रिकॉर्डेड एज योर लायबिलिटी. Which of the following combination correctly describes the need of personal account for customers in a business? Number 1, to deal with customers query, right. बिल्कुल, कस्टमर किसी वक्त भी आपको फ़ोन करके पूछे कि उसने आपको कितने पैसे अदा करने हैं, तो आप उसे बता सकते हैं. दिस इज़ द रीज़न फॉर प्रिपेयरिंग पर्सनल अकाउंट फॉर कस्टमर्स. To prepare statement, right. To monitor customers credit limit, again right. To match cash received with invoices. So all points are valid. So the correct option would be D. In A's payable ledger,
B has a debit balance. How could this have arisen? अगेन ये वही बात है कि अगर ए ने बी को ज़्यादा अमाउंट पे कर दी है, जितनी वर्थ की उसने गुड्स परचेज किए हैं उससे ज़्यादा अमाउंट पे कर दी है, इन दैट केस इट कैन हैपन, इट कैन अराइज. सो द करेक्ट ऑप्शन, ए हैज़ बॉट गुड्स फ्रॉम बी, नो. बी हैज़ बॉट गुड्स फ्रॉम ए, नो. ए हैज़ ओवर पेड बी फॉर गुड रिसीव. जो भी गुड्स उसने रिसीव किए उसके लिए उसने ज़्यादा पेमेंट कर दी, दैट इज़ वाई उसका डेबिट बैलेंस रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई इज़ पर्सनल अकाउंट फॉर अ सप्लायर कैप. आप एक सप्लायर का पर्सनल अकाउंट क्यों रखते हैं? सप्लायर का पर्सनल अकाउंट इसलिए रखा जाता है ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर सकें कि इस पर्टिकुलर सप्लायर को आपने कितने पैसे पे करने हैं. सो टू फैसिलिटेट पेमेंट टू रिसीवेबल, रॉन्ग, क्योंकि सप्लायर का रिसीवेबल से कोई कंसर्न नहीं है. सेकंड, टू इंश्योर एन अकाउंट आर पेड इन फुल, आपके पास अकाउंट फुली पे कर दिया गया है, तो पर्सनल अकाउंट रखने का ये पर्पस भी नहीं है. थर्ड है, टू चेक द अमाउंट ड्यू एग्रीज टू अ स्टेटमेंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर प्रायर टू पेमेंट, कि पेमेंट से पहले जो आपने सप्लायर से स्टेटमेंट रिसीव की है उसके मुताबिक अमाउंट ड्यू जो है वो मैच कर रही है, एग्री है. सो दिस इज़ द राइट पर्पस. एंड टू इंश्योर डिस्काउंट अलाउड आर टेकन, डिस्काउंट अलाउ हमेशा रिसीवेबल के रेफरेंस से होता है, पेबल के रेफरेंस से नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैलेंस ऑन द पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट शुड बी इक्वल टू विच फिगर इन द अकाउंटिंग सिस्टम. तो आपके पास जो पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट है वो टोटल सप्लायर को जो आपने पेमेंट करनी है वो मेंशन करता है. एंड इट शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल सप्लायर, सम ऑफ इंडिविजुअल के सप्लायर के बराबर होना चाहिए. तो ये आपके पास मेंशन है, टोटल ऑफ द बैलेंस ऑन द इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट. रिमेंबर दैट कि आपके पास कस्टमर का कोई कंसर्न नहीं है कि आप जो है ए या सी ऑप्शन को या डी ऑप्शन को कंसिडर करें. इट इज़ ओनली द सप्लायर विच इज़ कंसर्न विद पेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम बट दिस टाइम दे हैव आस्क्ड अबाउट द रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट, और इसका आंसर चूँकि रिसीवेबल की बात हो रही है, इसका कंसर्न सिर्फ कस्टमर से है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है. अदरवाइज अगर हम सिंपली बात करें तो तब भी कंट्रोल अकाउंट में टोटल कितने पैसे आपने अपने रिसीवेबल से रिसीव करने हैं ये मेंशन किया जाता है. एंड इट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट. सो इसका ऑप्शन आपके लिए बी आ जाएगा. नाउ व्हाट इज मीन बाय द टर्म इंटीग्रेटेड रिसीवेबल लेजर. इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है कि जिसमें दोनों सेट्स ऑफ अकाउंट एक ही बुक में मेंटेन किए जाएं. Double entry processes no longer operate because this is an example of compressed system. No, this is not true. आपके पास इंडिविजुअल लेजर अकाउंट भी और कंट्रोल अकाउंट भी अगर एक ही बुक में मेंटेन किए जाते हैं, एक ही साथ मेंटेन किए जाते हैं, तो वो आपके लिए इंटीग्रेटेड रिसीवेबल लेजर है. सेकंड, सेपरेट पर्सनल अकाउंट आर नो लॉन्गर मेंटेन, कंट्रोल अकाउंट ओनली आर केप्ट. नो, आपके पास दोनों मेंटेन किए जाने हैं. Third, customer accounts are part of double entry system. Journal ledger and receivable ledger posting are combined. So this is the right option कि जिसमें combinedly चीज़ें पोस्ट की जा रही हैं. Fourth, customer and supplier accounts are combined in one integrated ledger. Remember that customer और supplier कभी इकट्ठे मेंशन नहीं किए जाते. They should always be showed separately. Customer और supplier हमेशा separately शो किए जाते हैं, तो this is not true.